node node B. KCL to node B. So if you apply KCL to node B, you see that it is IO is equal to I1 plus IF. Okay. So now you have to write this in terms of VO. Because we want to find out the effect at the output side. So you will write everything in terms of VO. So IO in terms of VO will be equal to VO upon ZO, complete output impedance of the circuit. I1 will be VO upon ZO dash. Suppose we are saying ZO dash is the ZO of the amplifiers, only the amplifier or the device, and this will be equal to VO minus VI upon the reactance of capacitor, which is XCF. ठीक है, अब इसमें से आपको VO कॉमन निकालना है. टेक आउट VO कॉमन फ्रॉम दिस. So your above equation will be 1 by ZO is equal to 1 by ZO dash plus 1 minus Vin by VO upon XCF. Right? Vin upon VO minus XCF. अब इस we know that AV is equal to VO by Vin. Therefore, what will be your Vin by VO? It will be nothing but Vin by VO will be equal to 1 by AV. So this term Vin by VO is nothing but 1 by AV. So 1 by ZO is equal to 1 by ZO dash plus 1 minus 1 by AV upon XCF. अब बस XCF को solve करो like we did in the last time. What is XCF? We will solve this complete term. Solve this complete term. So 1 minus 1 by AV upon XCF is equal to 1 minus 1 by AV. Let this term be equal to K. Every time because you're solving it, it creates a confusion. So let this term be equal to K. So this term will come out to be K upon XCF. You have to solve this. So K upon XCF. XCF is 1 by 2 pi omega CF. So it is equal to K into 2 pi omega CF. Okay, so this will be your equation. हमने वहाँ पे negative sign ली थी. So to remove your negative sign, you will write it this equation as K upon, because you have to remove your negative sign, 2 pi omega CF. 1 by 2 pi omega CF is nothing but the reactance of your capacitor. So ये K term आ गया है. So K into your CF is the new value of your capacitor, because ये term 1 by 2 pi omega CF is nothing but the reactance of capacitor. So now you have K upon reactance of your new capacitor. So what will be your value of your new capacitor? It will be K into the value of that capacitor. और K क्या है आपका? 1 minus 1 by AV into CF will be the value of your new capacitor. Clear? मैम ये माइनस क्यों लिया? माइनस XCF मतलब वो समझा नहीं. Reactance of capacitor is always lagging ना. Capacitor is lagging in nature. तो इसलिए नेगेटिव होता है रिएक्टेंस. माइनस j ओमेगा होता है आपका. रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस j ओमेगा. ओके, बिकॉज इट इज लैगिंग इन नेचर. यानी लैग होता है. अगर आप उसको करंट और वोल्टेज को कंपेयर करोगे, अगर कैपेसिटर होता है तो कैपेसिटर लैग करता है नेचर में, इसलिए नेगेटिव साइन आता है उसका, और इंडक्टर का पॉजिटिव साइन आता है. क्लियर?
बस इसको थोड़ा सा अच्छे से स्टेप्स वाइज कर लोगे, जैसे इनपुट का किया था, you will get it. So if I substitute it back, it will be 1 by ZO is equal to 1 by ZO dash plus 1 by XCMO. Again, it is an addition of inverse addition of your impedances. Therefore, we say that your output Miller is also connected in parallel, is also in parallel. Is it clear? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. And you try to solve it. खुद से अभी थोड़ा step wise को. I've given you the basic steps. Step wise, each and every step करोगे. If you still have doubt, we can solve it in the next lecture. Okay? Now let me go to your high frequency analysis. In your high frequency analysis, ma'am has done all the revision. So we basically know that there is a Miller effect. Now we do the numerical also. So as I told you, I will be taking your FET into picture. We will talk about FET. BJT भी same रहेगा. You just have to change the notations. So this is your FET amplifier, which you have to analyze for your high frequency. अब जब आपको when you see the circuit, you will not see the parasitic capacitance given in your circuit, because parasitic capacitance are not seen by your naked eyes. तो वो जरूरी नहीं है कि आपको circuit पे mention किया गया. This will be your circuit. Your normal circuit will look like this only. And this circuit you have to analyze for your high frequency. And this is your FET. Okay. So looking at the circuit, it is similar to your normal amplifier circuit, but you have to analyze this for your high frequency. So we start with the first step. Your step 1 is to draw the AC equivalent of this. At high frequency. At high frequency, you have to draw its AC equivalent. So when I talk about high frequency, the first thing you know that these external capacitance, that is your coupling capacitor C1, C2 and CS are short circuit. Okay. So you know this, that when we talk about high frequency, the first thing which you should always remember is that your CS, CC1 and CC2 are short. ये हमको अभी तक समझ गया है कि हाई फ्रीक्वेंसी यानी शॉर्ट होंगे. Second thing, because we are drawing the AC equivalent, your VDD should be connected to ground. ये हमारा रूल है. AC equivalent का हमारा रूल है कि DC sources should be grounded. After considering these two, now you will draw the AC equivalent. So let me draw the 3 points for the terminals of the FET. This is your gate terminal, drain terminal and source terminal. Between drain and source, there is a current source whose value is GMVGS. And there is a resistance also, which is small rd. And between gate and source, there is an open circuit. This is your equivalent of FET. Equivalent of FET. I hope this equivalent is clear to you. FET ka equivalent is just 3 terminals. Internally, how your FET looks for your AC supply.
Now we have to do the remaining connections. अभी मैं सिर्फ ये सर्किट को ऊपर वाले सर्किट को कंसिडर करके ही connections करूँ, nothing more than that. So from your gate you will start, and we know that R1 and R2 will come in parallel. So I'm just taking R1 and R2 in parallel and giving a notation as RG. RG is nothing but R1 in parallel to R2. Then there is a capacitor C1 which will act as short. Recording in progress. And then there is your R signal, resistance R signal, and your input. ये जैसे आपने लो फ्रीक्वेंसी के लिए बनाया था, same. Come to your source. This is your source terminal. अपने circuit पे देखो. This is your source terminal. Come to your source. Because CS is short circuit, your RS will become redundant. Therefore, your source will directly go to ground. Okay. Now come to your drain. RD will go to VCC, which is grounded. So RD is ground. उसके बाद का कैपेसिटर हमारा शॉर्ट है. You have RL which will also be grounded, and then there is a output voltage. Clear till here? Any doubts till here? No, ma'am. अब मैं क्या कहूँगी, मुझे हाई फ्रीक्वेंसी बनाना है. तो what we know is that आप मैं डॉटेड यहाँ पे बोलूंगी, ये आपको इमेजिन करना है. आप नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, because till now you should know that there is a capacitor over here. You should know this, that there is a capacitor over here, there is a capacitor over here, and there is a capacitor over here. You should know this. So there's no need to draw this. I'm just drawing it so that you can understand how I'm doing the connections. There is a capacitor over here and there is a capacitor over here. You know this. अभी तक हमको ये पता चल गया. This capacitor is CGD between gate and drain. This is CGS and this is CDS. This is the wiring capacitance at the input side. This is the wiring capacitance at the output side. ठीक है? इसमें से this capacitor CGD is nothing but your feedback capacitor. Okay, so CGD is the feedback capacitor. तो ये दोनों साइड हमको इफेक्ट देगा at the input and at the output side. So input side में हमने क्या बोला था? It is connected in parallel, right? Yes. Yes, ma'am. हाँ, तो what we will do at the input side यानी gate से, from gate it will be connected in parallel. So this is the input side. Coming back to your gate, input side it is connected in parallel over here, ground कर दो. That is CMI. उसका इफेक्ट क्या था? CMI, Miller capacitance at the input side. Done. Your gate part is done. Clear with this? Any doubts? अभी मैं हाई फ्रीक्वेंसी पे आई एम गोइंग बैक. मैं गेट का देख रही हूँ अपने सर्किट पे. So what I am seeing that there is a capacitance CGD at my gate, which will have the effect at the input side, which is your Miller capacitance. तो मैंने CMI connect कर दिया parallel में. Done till here? Any doubts? No, ma'am. Understood. दूसरा आपको कौन सा कैपेसिटर दिख रहा है? ये वाला कैपेसिटर CGS, right? You are seeing CGS. CGS is going to your source, right? अब आपके equivalent circuit में source is grounded. Come to your equivalent circuit. See your equivalent circuit. Your source is grounded. So from your gate there is CGS which will go to source. This connection CGS which will go to source and source is grounded. तो गेट से, मेरे गेट से एक और कनेक्शन है. 1 minute, let me rub this part.
I'll write over here RG. So what we see that from your gate, there is another capacitor which is connected to ground. This capacitor connected to ground. वो कौन सा है? CGS. Clear with this? Any doubts? ओ मैम ये नहीं समझा CGS का। ये नहीं समझा? अभी अपने सर्किट पे जाओ। आई एम गोइंग बैक टू योर सर्किट। दिस इज योर सर्किट। ये सर्किट दिखा रेड डॉट बिग वाला गेट पे? हाँ वहां से एक कैपेसिटर है CGS। ये कैपेसिटर CGS, हाँ ये कहाँ गया है? सोर्स पे। यस सोर्स हमारा क्या हो रहा है? इक्विवेलेंट में देखो, सोर्स हमारा क्या हो रहा है? ग्राउंडेड है। ग्राउंड है, तो ये CGS इनडायरेक्टली कहाँ जाएगा? ग्राउंड पे, क्योंकि सोर्स हमारा ग्राउंड है। तो गेट से CGS हमारा ग्राउंड पे जाएगा। सो फ्रॉम गेट CGS विल गो टू ग्राउंड। अब समझा? यस मैम। अब आ जाओ। अब ये पूरा कनेक्शन हो गया। गो बैक टू योर इक्विवेलेंट यानी सर्किट। ये हमने कनेक्शन कर दिया, शॉर्ट कर दिया, आर सिग्नल कर दिया। आर सिग्नल के बाद आपको क्या दिख रहा है? एक और कैपेसिटर दिख रहा है यहाँ पे CWI, जो ग्राउंड पे कनेक्टेड है, राइट? हाई फ्रीक्वेंसी पे। तो यहाँ पे सिंपल आर सिग्नल के बाद एक और कैपेसिटर है जो कनेक्टेड है ग्राउंड को, विच इज CWI। क्लियर? यस मैम। समझ गया? सो ऑल योर कैपेसिटर्स आर ओवर हियर। हमने इनपुट साइड के सब कैपेसिटर्स कनेक्ट कर दिए। इन सब कैपेसिटर्स को वी विल कॉल योर इनपुट कैपेसिटर, which is CWI plus CGS plus CMI. Clear? तीनों capacitors they are connected in parallel. उनको हम ऐड कर रहे हैं because parallel में ऐड होते हैं capacitors, तो हमने तीनों को ऐड कर दिया। Part clear with this part? यस मैम। अब आ जाओ हमारे आउटपुट साइड पे। अब हमको जाना है और देखना और किधर कैपेसिटर। हमने गेट पे तो देख लिया। अब वापस अपने सर्किट पे हमने ये पार्ट पूरा कंप्लीट कर दिया, गेट का पार्ट। अब हमको और क्या आ गया? हम अगर ड्रेन पे आ गए ना, दिस इज योर ड्रेन पॉइंट। अब मैं ड्रेन पे आई। ड्रेन पे आई तो मैंने वापस क्या देखा? CGD है जो फीडबैक कैपेसिटेंस है। तो we know that it will have the effect at the output side in form of CMO. तो अभी मैं ड्रेन पे उसको कनेक्ट करूंगी। अब मैं उसको ड्रेन पे कनेक्ट करूंगी। So I'm going over here. This is my drain point. ठीक है, कोई भी पॉइंट ले सकती है, पूरा शॉर्टेड है तो कहीं पे भी मैं ले सकती हूँ, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ ले रही हूँ। दिस इज माई ड्रेन पॉइंट connected to ground. This is CMO, Miller capacitance at the output side. समझ गया? जो हमारा फीडबैक था उसको हमने मिलर कैपेसिटेंस एट द आउटपुट साइड। क्लियर टिल हियर? यस मैम। अब एक और कैपेसिटर दिख रहा है यहाँ पे, देखो ड्रेन से वापस एक कैपेसिटर दिख रहा है हमको CDS, वो भी हमारे सोर्स पे जा रहा है। सोर्स हमारा वापस ग्राउंड है, ठीक है? तो ये CDS क्या होगा? हमारा ग्राउंड पे जाएगा। सो फ्रॉम ड्रेन CDS इज हियर विच विल गो टू ग्राउंड। ये समझा आपको? यस मैम। अब लास्ट कैपेसिटर हमारा कौन सा है? आउटपुट से CWO which is going to ground. तो ये आउटपुट से CWO which is going to ground. Clear? Is this clear? आउटपुट से CWO which is connected to ground. तीनों कैपेसिटर्स क्लियर है? आउटपुट साइड कनेक्शन? यस मैम। तो अब हम इसको वापस राइट डाउन कर देंगे। इसको बुलाएंगे हम आउटपुट कैपेसिटर विच इज ऑल्सो ऑल द थ्री आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो वी विल जस्ट ऐड देम। सो इट विल बी CWO प्लस CDS प्लस
CMO. ओके, अब यहाँ पे आपको पता है CMI is nothing but CF into 1 minus AV and CMO into 1 minus 1 by AV. तो CF आपके केस में क्या है? लेट मी राइट डाउन इन कर्ल्स. FET लोगे तो CF की वैल्यू क्या है? इट इज नथिंग बट CGD. Okay, this capacitor CGD is also called as, we have two notations, we can give it two notation. One notation is the feedback capacitor, or you can also call it as your C mu. You can call this as C mu. कहीं कहीं आपको बुक में दिखेगा C mu भी बोला हुआ है. Okay, CGD is equal to CF, which is equal to C mu, and your one more capacitance is there, that is CGS. CGS which is equal to C pi. तो कहीं कहीं नोटेशन आपको न्यूमेरिकल्स में C pi भी दे सकते हैं. तो you have to understand that we are talking about CGD and we are talking about CGS. So it can be C mu, it can be C pi, or it can be CF also. CGD can be CF also. ये समझ गया सब चीज? यस मैम. अब ये सब कैपेसिटर्स के बाद हम वापस अपना इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे. रीड गो, वी विल रीड गो द इक्विवेलेंट. सो जब मैं रीड गो करूंगी वापस, दिस इज माय गेट, ड्रेन, सोर्स, GM, BGS, small RD, this is connected to ground, VGS. अब हमें यहाँ पे क्या दिखेगा कि एक कैपेसिटर है पैरेलल में, जिसको हमने बोला है CI, इनपुट कैपेसिटर. ओके, यहाँ पे एक कैपेसिटर है हमारा आउटपुट पे, CO. उसको वापस में वही सर्किट को बना रही हूं. इतना मुझे पता चल गया, सब कैपेसिटर पैरेलल में तो एक कैपेसिटर कर दी. और क्या है? यू हैव RG एंड यू हैव R सिग्नल विच इज गोइंग टू इनपुट. तो वो ड्रॉ कर दो. सो वी हैव RG फ्रॉम योर गेट, रेजिस्टेंस RG, एंड वी हैव R सिग्नल, and this is your VI. Similarly over here you have RD और RL दोनों पैरेलल में है, so RD in parallel to RL. This is your VO. मैंने रीड ड्रॉ कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया. ओके, सो अब मुझे इसमें से अपना हाई फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी. नाउ दिस बिकम्स माय हाई फ्रीक्वेंसी इक्विवेलेंट सर्किट. तो इसमें कितने कैपेसिटर्स हैं which will have the effect? How many capacitors over here now? 2 capacitors. 2 capacitors. So 2 frequencies will come. जैसे लो फ्रीक्वेंसी पे 3 कैपेसिटर्स थे तो 3 फ्रीक्वेंसी आई थी, राइट? अब यहाँ पे हमारे 2 ही कैपेसिटर्स हैं तो 2 frequencies will come. One frequency will be your FHI, high frequency due to input capacitor CI, and one will be FHO, high frequency due to output capacitor CO. Okay, so आपको इन दोनों के लिए R equivalent find out करना है. फॉर्मूला हमारा फ्रीक्वेंसी का सेम है, FHI हो, it is 1 by 2 pi R equivalent into that particular capacitor, that is CI. सिमिलरली यहाँ पे FHO का फॉर्मूला भी आपका सेम रहेगा, 1 by 2 pi R equivalent into CO.
ओके, अब इसके लिए आपको आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो इनपुट कैपेसिटर इज एट द इनपुट साइड, ये है। तो यहां से आप देखो और आर इक्विवेलेंट बताओ मुझे, कौन सा दिख रहा है इक्विवेलेंट आपको? R signal parallel to RC. Very good. It is R signal in parallel to RG. अब हो गया, हमको आ गया इक्विवेलेंट आ जाएगा। यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू एंड यू हैव टू गेट योर फ्रीक्वेंसी। अब आ जाओ आउटपुट साइड के आर इक्विवेलेंट को। अब यहां से देखो आउटपुट साइड से मुझे क्या दिख रहा है इक्विवेलेंट, कौन सा रेजिस्टर दिख? एक तो ये है, RD हाँ, यस, स्मॉल आर डी पैरेलल टू parallel कैपिटल आर डी पैरेलल टू आर एल। वेरी गुड, अपना आ गया इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट आ गया, इसे फॉर्मूला में पुट करो, यू विल गेट द फ्रीक्वेंसी। अब हमारी डोमिनेंट कौन सी होगी? आई हैव टोल्ड यू व्हिच वन इज द डोमिनेंट। लोएस्ट वन। Yes, dominant will be the lowest of the higher frequency. ठीक है, clear with this analysis? Any doubt in this? Any doubts? Please tell me. Class, is this clear? yes ma'am. Yeah, thank you so much. अब because you know this, मैं आपको बहुत फास्ट बीजेटी बता रही हूँ, कोई चेंज नहीं है बीजेटी और इसमें। आई एम नॉट ड्रॉइंग योर इक्विवेलेंट ऑल्सो, आई विल नॉट ड्रॉ योर इक्विवेलेंट। आई थिंक यू कैन ड्रॉ द इक्विवेलेंट। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा बीजेटी में, जिसको आपने यहाँ पे CGS, आई एम जस्ट राइटिंग CGS will be replaced. This arrow is for replace. That will be replaced by CBE. Okay, just replace your CGS by CBE. Then replace your CGD by CBC. And replace your CDS by CCE. सिर्फ ये रिप्लेस करना है आपको, so you will get your equivalent circuit. Okay, after that your R equivalent at the input side, I'm writing your input, it will be equal to R signal, same आएगा, in parallel to RG के बदले में हम उसको RB बुलाते हैं। Okay, instead of RG we call it as RB. एक और टर्म यहाँ पे आ जाएगा which is small r pi, क्योंकि वहां पे बीजेटी में वो नहीं होता है, ओपन सर्किट नहीं होता है। बीजेटी का अगर आप इक्विवेलेंट देखोगे तो यू नो देयर इज r pi ओवर हियर एंड देयर इज अ करंट सोर्स लाइक दिस, तो ये r pi भी पैरेलल में आ जाएगा आपके। और R equivalent at the output side will be equal to, इधर RO आ जाएगा RD के बदले में, इधर RC आ जाएगा in parallel to RL. Okay, that is the only change in your BJT. Clear? बाकी फॉर्मूला वो मिलर कैपेसिटेंस का सेम ही रहेगा, जो फीडबैक कैपेसिटेंस है यहाँ पे CBC हो गया है, और फीडबैक कैपेसिटेंस को एज आई टोल्ड यू, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज C mu. You can call this as C mu and you can call this as C pi. Clear with this part? Up. One more important, very important frequency is there. One more very important frequency is there, which is known as your transition frequency. That is transition frequency. Which is given as F
T। अभी तक हम जिसकी बात कर रहे हैं, हमने अभी तक जो भी बात की है AV, दैट इज वोल्टेज गेन की बात की है। आपने जो ये बैंडविड्थ फाइंड आउट कर रहे हो, आप वोल्टेज गेन के लिए कर रहे हो, बट एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ये भी ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो एट very high frequency, at very high frequency. You get this frequency, transition frequency. What is transition frequency? It is that frequency at which the CE short circuit current gain becomes unity. यानी अब जो करंट गेन की जो वैल्यू है वो 1 हो जाती है इधर। सीई शॉर्ट सर्किट करंट गेन की वैल्यू 1 हो जाती है एट दिस फ्रीक्वेंसी। और अगर मैं एफईटी की बात करूंगी तो सीई के बदले वहां पे क्या आना चाहिए, बताओ मुझे। कलेक्टर एफईटी है तो कलेक्टर के बदले डी आना चाहिए और एमीटर के बदले एस आना चाहिए। तो डीएस शॉर्ट सर्किट करंट becomes unity. So it is that frequency in which if I'm talking about FET, DS short circuit will become unity, and if I'm talking about BJT, CE short circuit current gain will become unity. Okay, it is that frequency. उसके लिए we have a set of formulas. I'll directly give you the formulas. We will not go into derivation of those. So for BJT and for FET. For BJT, you have to first find F beta. What is F beta? It is it is 3 dB down frequency for current gain. ये आपके वोल्टेज गेन के लिए नहीं है, ये करंट गेन के लिए। यानी जब आप करंट गेन को 3 dB डाउन लोगे तो जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी दैट इज नोन एज एफ बीटा. इट इज योर 3 dB डाउन फ्रीक्वेंसी फॉर करंट गेन, or it is called as your beta cutoff frequency. It is also called as beta cutoff frequency. Okay, so for BJT, your beta cutoff frequency is given as, सबसे पहले अपने को F beta find out करना है, so it is given as 1 by 2 pi your R pi into bracket C pi plus C mu. अभी C pi आपका क्या है? C pi is nothing but CBE. I am writing over here. We know that C pi can be CBE and C mu is nothing but CBC. So it is given as 1 by 2 pi R pi C pi plus C mu. After you find out your beta cutoff frequency, your transition frequency is given as beta into F beta. So these are the two formulas, or this is the definition. I'm repeating, transition frequency is that frequency at which your short circuit current gain becomes unity. अगर BJT है तो कॉमन एमीटर शॉर्ट सर्किट, अदरवाइज इट इज ड्रेन सोर्स शॉर्ट सर्किट. क्लियर विद ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी. उसके बाद हमको फाइंड आउट करना है BJT के लिए व्हाट इज योर ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी. सो फॉर दैट यू फाइंड आउट F beta, which is nothing but your beta cutoff frequency, the frequency at which your current gain is 3 dB down from its maximum value. और वो उसका फॉर्मूला क्या है? 1 by 2 pi R pi C pi plus C mu. Of FT is beta F beta. And for FET, you will directly find out your transition frequency FT, which is equal to GM upon 2 pi
C pi plus C mu. डायरेक्टली आपका फॉर्मूला है. C pi over here is nothing but C GS and C mu is nothing but C GD. Clear with it? Formulas clear है? मैम फॉर बीजेटी सीपा एंड सीमी की वैल्यू क्या है, मतलब लाइक किसकी करस्पॉन्डिंग है? बताया ना, ये देखो C pi is CBE and C mu is CBC. ओके मैम. Okay? Ma'am, what is this short circuit current gain becomes शॉर्ट सर्किट करंट गेन क्या होता है? जो आपने इक्विवेलेंट बनाया है, ये मैं आपको इधर का बता रही हूँ, एफईटी का ही बता देती हूँ, एफईटी का बना हुआ है वो आपको पूरा उसका. अभी अपन जो बात कर रहे हैं वोल्टेज गेन की कर रहे हैं, बस शॉर्ट सर्किट करंट गेन क्या होता है? ये जो आपका सर्किट है, आपने इक्विवेलेंट बनाया, ओके, इसके बाद आपने बोला ड्रेन और सोर्स को मैंने शॉर्ट कर दिया है, ड्रेन और सोर्स को आपने शॉर्ट कर दिया है, तो उसके बाद आपको पूरा वापस सर्किट का एनालिसिस करना पड़ता है और ये डेरिवेशन निकालना पड़ता है. तो इस जब ये ड्रेन और सोर्स को शॉर्ट कर दिया तो करंट गेन क्या होता है? करंट गेन इज नथिंग बट आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट. सो यू विल बी फाइंडिंग आउट व्हाट इज द आउटपुट करंट, व्हाट इज द इनपुट करंट. ओके, मैम बट ड्रेन और सोर्स को शॉर्ट किया तो वो करंट सोर्स भी चला जाएगा ना, जीएम कैसे चले जाएगा? देखो देखो कौन सा करंट बचेगा? GMVGS बचेगा ना, कैसे चला जाएगा? रेजिस्टेंस सब रिडंडेंट हो जाएंगे, तो आपका इक्विवेलेंट अगर देखोगे तो ऐसे बचेगा आपका इक्विवेलेंट, ये रहेगा आपका इक्विवेलेंट आउटपुट साइड पे, ये GMVGS. समझा? हाँ मैम, ओके. रेजिस्टेंस कैपेसिटर ये सब नहीं रहेगा, बट ये रहेगा ना आपका आउटपुट करंट रहेगा GMVGS. ओके, एंड मैम वैसे इन बीजेटी बेस एंड कलेक्टर शॉर्ट होगा ना कि बेस और कलेक्टर क्यों होगा? बीजेटी में क्या होगा? ड्रेन के बदले कलेक्टर आएगा और इधर एमीटर आएगा. कलेक्टर और एमीटर शॉर्ट होगा आपस में, बेस नहीं होगा. बीजेटी में ये होता है बेटा, बेस, कलेक्टर एंड एमीटर. ठीक है? एंड मैम बाय यूनिटी यू मीन 1 एम्पियर हो जाएगा ना? 1 एम्पियर. अगर गेन की वैल्यू 1 होगी, गेन यूनिट नहीं होता है ना? ये देखो, अगर यहाँ पे भी एम्पियर्स है और यहाँ पे भी एम्पियर्स है तो कैंसिल होता है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा आपके करंट गेन का. मैम फिर बीटा क्या होगा? बीटा वन रहेगा क्या? नहीं नहीं, बीटा तो ज्यादा रहता है ना, बीटा का उससे रिलेशन ही नहीं है. ओके ओके. बीटा का कुछ रिलेशन नहीं है, हम करंट गेन की बात कर रहे हैं, एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहे हैं हम. एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी जब आपका मैग्नीट्यूड ऑफ करंट गेन बिकम्स 1, तब जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. ओके, एनी अदर डाउट्स? नो मैम. So I'll stop over here and take a quick break of 5 minutes and we'll go to the numerical for FET, high frequency numerical.
Recording stopped.
Good morning, students. I hope you are back. Yes, miss. Yeah. Can you please turn on the video so that I can see you all? Thank you so much. So now we'll be solving one numerical based on your high frequency response, which we studied right now. So let me share my screen. Recording in progress. Is the screen visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, is the numerical visible to you all? Yes, ma'am. Yes, sir. Now see, this is your numerical, this is FET given to you. Looking at the parameters, the first thing is looking at the parameters, you have to identify whether this is your JFET or it is your E MOSFET or D MOSFET or anything like that. So I'll look at the parameters and we can identify this. So if you look at the parameters, it is given circuit, it is fine. The transistor parameters are Kn and Vtn. Looking at these two only, symbol से नहीं पता चलेगा, तो we looking at these two, Kn and Vtn, we know that this is E MOSFET. Okay, so this is E MOSFET. First thing. Now you have to start your analysis. They have asked you to determine Miller capacitance, the upper 3 dB cutoff frequency, the mid band voltage gain. अगर ये सब नहीं भी पूछा है आपसे क्वेश्चन में, मिलर अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में, मिड बैंड गेन भी नहीं दिया है, सिर्फ 3 dB बोला है आपको, still you have to find your Miller, because you know to find out the high cutoff frequency, you should know the Miller capacitance. Okay, you have to find out, and to find out your Miller capacitance, you have to find out the voltage gain. तो AV भी आपको find out करनी है. Okay, in some questions, what we can do is we can ask you to find out the bandwidth. Find the bandwidth. So अगर आपको bandwidth बोला है find out करने, so you have to remember that you have to do the low frequency analysis also, and you have to do the high frequency also. Low frequency का dominant find out करो, high frequency का dominant find out करो, and your bandwidth will be FH minus FL. So for bandwidth, you also have to find your low frequency. तो कभी-कभी हो सकता है सिर्फ circuit दिया है और आपको बोला है कि you find the bandwidth of that circuit. Because we know that आपको low frequency भी पता है, आपको high frequency analysis भी पता है. तो आपको दोनों एनालिसिस करना है, उनका डोमिनेंट फाइंड आउट करना और फिर बैंडविड्थ फाइंड आउट करना है. क्लियर विद दिस पार्ट? क्लियर? यस, नो, प्लीज रिप्लाई. Yes, ma'am. हाँ. So up we will start with this numerical. What is given and what we have to do in this numerical. सबसे पहले, the first step which we have to do is you have to do the DC analysis. First step. Why you have to do the DC analysis? Because you have to find out the value of GM. You have to do DC analysis to find GM. So if आपके क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन चेंज कर दूं मैं और मैंने इसमें GM दिया है, तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम इन डूइंग DC एनालिसिस. तब आपको DC एनालिसिस की जरूरत नहीं है. So you have to be very clear when you have to do DC analysis. You have to do DC analysis only if you have to find the value of GM. तो अब इस न्यूमेरिकल में तो GM नहीं दिया है, so I will have to do the DC analysis.
So I will first start with my DC analysis. So for DC analysis, we will first find out the value of VG. VG is given as R2 upon R1 plus R2 into VDD. तो इस केस में R2 is 50K upon 150 plus 50 into 5. You will get the value of VDD. Second step which I have to do is find out the value of RG. So RG is nothing but R1 in parallel to R2, which is equal to 150K in parallel to 50K. Iski values find out करवा. I'll go to the third step also. फिर आप find out कर सकते. Third step is equation of DC bias line. Equation of DC bias line is nothing but over here it is VG minus VGS minus ID RS is equal to 0. इसमें से आपको VGS की वैल्यू मिलेगी. VGS is equal to VG minus ID RS. Let this be equation 1. And we know ID is equal to Kn VGS minus VTN the whole square. तो इसमें हम पुट करेंगे ID is equal to Kn in my question. Kn in the question is given as 1 milli. यहाँ पे जो मैंने रेड से हाईलाइट किया है, this Kn is given as 1 milli, VTN is given as 0.8 volts. So I will put it over here in this equation. So this Kn is given as 1 milli VGS minus 0.8 the whole square. This is equation 2. Substitute equation 1 in 2. Substitute 1 in 2. यानी 1 में से जो आपकी VGS का इक्वेशन है वो सब्स्टिट्यूट करो. So ID is equal to 1 milli VG minus ID. RS का हम लोग अपने सर्किट में से देखेंगे. RS is 2K. So into 2K. So this is VG minus IDRS, which I have substituted, minus 0.8 the whole square. Okay, this is equation 3. So till equation 3, I want you to solve it. Solve, give me the value of VG, RG. Give me the value of VG and RG. Do it fast. You can note down the question. Take 5 minutes to note down the question. नहीं भी note करोगे तो चलेगा, because anyhow I'll be giving you this. So we'll likely go to solving. Don't note down this. Find out करो, मुझे VG का value दो. Give me the value of VG fast. You can start putting it in the chat box. Yes, Tushar. Tushar, please check the value. 50. Okay. Okay, it is 1.25. VG is 1.25. And how much is your RTH? 37.5. Yes. VG is coming out to be 1.25 volts.
and Rg is coming out to be 37.5 kilo ohms. Yes. Yes, Radhika, it's right. Other students, please start putting your answers. If you're done with this, now come to your equation 2. Come to your equation 3. Equation 3 में आप put करो अपनी Vg की value. Id is equal to 1 milliamps. Vg is 1.25 minus Id 2K minus 0.8 the whole square. So 1.25 minus 0.8. ID is equal to 1 milli into 1.25 minus 0.8. How much it is? Please give me that value. Yes, it is right. 1.25 and 37.5. VG और RG आ गया. VG RG आ गया. उसके बाद हमने क्या किया? I am repeating the steps. After VG RG, you have found out the equation of DC bias light. This is VGS is equal to VG minus ID RS. And we know that for your E MOSFET, ID is given as Kn VGS minus VTN the whole square. उसमें Kn आपको क्वेश्चन में दिया है, VTN आपको दिया, आपने वो पुट किया और VGS का इक्वेशन पुट किया, VG minus ID RS, और you got the equation 3. इक्वेशन 3 में VG की वैल्यू आपकी जो आई है 1.25 पुट करो और सॉल्व करो. So you will get this 1.25 minus 0.8. So that is coming out to be 0.45 minus ID into 2K the whole square. Now just solve your equation 4 in your calculator. Solve your equation 4 in your calculator and find out the value of ID. Solve करो और ID का value find out करो. ID का दो values आएंगे because this is a quadratic equation. Solve equation 4 and get the value of ID. Have you understood? Class, have you understood? Yes, ma'am. जल्दी मुझे ID solve करके दो. Give me the equation of ID. Give me the value of ID.
You should get two values of ID. Suraj, please check the answer. Okay. I am getting the value of ID. I am getting two values of ID. One value is 0.204 milli. Anything nearer to this is fine. Another value I am getting is 0.905 milli. I am getting two values because it is quadratic. तो हम कैसे find out करेंगे which one is better? Okay, so go to equation 1 and solve it. Find VGS. Find VGS. So when I put this value of ID, when I put ID as 0.905, I get the negative value of VGS, which is not possible in E-MOSFET. So this is a wrong value. Therefore, ID will be equal to 0.204 milliamps. I am getting this value. I am repeating the steps. You will get two values. For the values, find out the value of VGS. अगर VGS आपका नेगेटिव आ रहा है, it is not possible, तो वो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी. Second value will be the value of ID. Clear? Is this clear? आंसर्स आए हैं आपके, काफी लोगों ने पुट किया है आंसर चैट बॉक्स में. प्लीज रिस्पॉन्ड क्लास. Yes, ma'am. So are you getting the answers? Ma'am, can you once again show the question? Question. 1 minute. This is the question. Okay, ma'am. So till ID we got it. Now you have to find GM. Next step is find GM. GM का हमारा फॉर्मूला है twice KN VGS minus VTN. ठीक है. अब अगर ID का मैं फॉर्मूला देखूंगी तो ID is equal to KN VGS minus VTN the whole square. इसमें से मुझे मिलता है ID by KN root is equal to VGS minus VTN. So find out GM. GM will be nothing but GM will be equal to twice Kn root of ID by Kn. I'm just substituting VGS minus VTN. Find out GM. Find out GM.
Give me the value of GM. Have you understood? You just have to put the value of ID, put the value of Kn, and find out the value of GM. GM is equal to Kn हमारा 1 मिली दिया हुआ है, रूट ऑफ ID हमको दिया हुआ आया है 0.204 मिली upon 1 milli. Find out. Give me the value of GM. I'm waiting for your answers. Please give me the value. Yes, Rohit, it's right. Others, please give me the value of GM. Yes, Tushar, it's right. पर मिली है, मेगा है, क्या है? Please tell me the units also. Yes, Million. yes. Aditya, please check. Yes, Kushal, it's right. Shruti, it's right. Aditya, please check. Value सही है, unit सही नहीं है. Just check it. Others, please give me the answers. Yes, Rishabh, it's right. Yes, Radhika, it's right. So the value of GM is coming out to be 0.903 millimole. Okay, 0.903 is the value of GM. अब DC analysis हो गया. Now we will start. Our aim was to find out the value of GM. So you have found out the value of GM from your DC analysis, which is 0.903 millimole. Now we start with our second step, which is AC analysis. AC analysis में high frequency में the first thing which you will do is find out Miller capacitances. And for Miller capacitances, you have to find out voltage gain. Voltage gain AV. Please remember, I'm highlighting this point. When you are finding the voltage gain for Miller capacitance, it will be without R signal and RL. R signal और RL को consider नहीं करना है when you are finding voltage gain for Miller capacitance. Please remember this. So you are not going to find out with RL and R signal. So you directly have your formula. AV is given as minus GM into RD. GM आपकी वैल्यू आई है 0.903 milli. RD in your circuit. Let me go back to your circuit and see what is RD. RD is given as 5K. So put RD as 5K into 5K. Find out the value of AV. Give me this value of AV. Yes. हाँ, मिली और के को कैंसिल करो, कितना आएगा रोहित? मिली और के को कैंसिल करो. Yes, Shreyash, it's right.
Others, please start putting your answers. I'm waiting. Yes, Kushal, it's right. Other students? Yes. Yes. So the answer over here which we get is minus 4.515. That is your voltage gain. The first thing which we found out for your Miller capacitance. Let me take this CGS and CGD 2 and 0.2. Okay. Let me write it over here bracket में CGS and CGD की जो value आपको दी हुई है, CGS is given as 2, I think. CGD is given to you as 0.2 pico and CGS is given to you as 2 pico. Question में दिया हुआ है ये CGS and CGD. मुझे बार बार ऊपर नहीं जाना पड़ेगा इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया. Now you find out, next point you will find out is, what we are doing is, we are finding Miller capacitances. ये Miller capacitance find out कर रहे हैं. First step हमने voltage gain find out किया. Second we will find out input Miller capacitance. Tell me the formula. What is the formula for input Miller capacitance? Anyone? I forgot the formula. Please help me out. CF into 1 minus AB. CF into 1 minus AB. CF क्या है हमारा? GD. CGD. हाँ, very good. CGD into 1 minus AB. So CGD is given to you as 0.2 pico. AB you have just found out. So 1 minus of minus 4.515. Find out CMI. Give me this value. Tushar, 1 minute. Let me check it. Yes, Tushar, both the values are right. Others, please start putting the values. Give me CMI. Yes, Mansi, it's right. रोहित चेक करो, आपका डेसिमल्स का प्रॉब्लम होगा है. No, roll number 54, please check. Yes, Kushal, it's right. Yes. So the answer we are getting over here is CMI, we are getting it as 1.103 picofarads. Okay. Next step, the next thing is Miller capacitance का हमने input find out किया, find the output Miller. I hope you all know the formula for output Miller. Just find out the output Miller capacitance CMO. CMO is equal to CF into 1 minus 1 by AB. So it will be equal to 0.2 pico. I'm directly putting the value now, 1 plus 1 by 4.515. CMO. Give me this value. Now give me CMO.
3.86 pico. I'm waiting for the answers. Point 244. 0.24. Yes, 0.244. It's right. Yes, yes. Yes. So CMO, we are getting it as 0.244 pico. तो आपको CMI मिल गया, CMO मिल गया. So first part we have done in your analysis. Now I'll copy the circuit. So first part we have done. We have found out this value of CMO and we have found out the value of CMI. Up we will go and we will start with your step B. Next step is find higher cutoff frequency. ठीक है, अब आपको जब हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो आपने इसका सर्किट किया है, यू नो द वैल्यू. हमें अपनी सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, सी आई. सी आई का फॉर्मूला, व्हाट वाज माय सी आई फॉर्मूला, सी एम आई प्लस सी जी एस प्लस सी डब्ल्यू आई. इज सी डब्ल्यू आई गिवन इन योर क्वेश्चन? वायरिंग कैपेसिटेंस दिया है क्वेश्चन में, चेक करो. ये ऊपर देखो, दिया है क्या वायरिंग कैपेसिटेंस का वैल्यू? यस, नो, प्लीज टेल मी. नो मैम. No, ma'am. Not given. नॉट गिवन. हमको किसकी वैल्यू दी है? सिर्फ CGS और CGD की वैल्यू दी है, राइट? तो वायरिंग कैपेसिटेंस इज नॉट गिवन टू यू. अगर वो नहीं दिया है तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे हमारे फॉर्मूले में. सो इट विल गो फ्रॉम अ फॉर्मूला, इट विल नॉट बी देयर. क्लियर? जो दिया है कैपेसिटर उसके हिसाब से जो हम फाइंड कर सकते हैं, वी विल पुट दैट. सो CI इज इक्वल टू CMI प्लस CGS. Similarly over here CO will be equal to only CMO, क्योंकि वायरिंग कैपेसिटेंस भी नहीं दिया है एंड योर कैपेसिटर बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स इज आल्सो नॉट गिवन टू यू. दिस इज आल्सो नॉट गिवन, सो इट विल बी जस्ट CMO. So find out the value of CI. CI is equal to CMI plus CGS. CMI आपका आया था 1.103 pico plus CGS. CGS is how much? 2 pico. So how much will be your CI? Give me this value. CGS question में दिया हुआ है 2 pico. तो CI कितना हुआ? Just add the two. 3.1313 pico. Right? तो CI आ गया. Now you have to find R equivalent. Input side का R equivalent. You can look at this circuit and tell me your R equivalent will be nothing but यहाँ पे R signal के बदले हमको RI दिया हुआ है. So it will be RI in parallel to RG. So just find out your R equivalent, which is RI in parallel to RG. So this is equal to 20K in parallel to RG की वैल्यू हमारी कितनी है? 37.5 I think. 37.5K. So find out R signal. Is this part clear? हमारे पास जो फॉर्मूला था लास्ट इसमें हमने जो डिराइव किया था, R सिग्नल दिया था, बट अभी न्यूमेरिकल में उसी को नोटेशन RI दिया है. तो I've just put in RI in parallel to RG.
Give me the value. Yes, yes. Others, please start putting it. Yes. So our equivalent is coming out to be 13.043 kilo ohms. Once you get our equivalent and once you get input, you can find out FHI, which is equal to 1 by 2 pi R equivalent into CI. Find this value, just put your R equivalent, put your CI, give me FHI. Fast. Yes, Tushar, Aditya, it's right. शिवम ये किसकी वैल्यू है 12.202? शिवम यस मैम. किसकी वैल्यू है ये 12.202? सॉरी मैम, CI मल्टीप्लाई करना भूल गया. हाँ करो करो 1/2 pi r. रोहित प्लीज चेक द वैल्यू. तपस 12.2 किसकी वैल्यू है? Yes, Radhika, it is right. Shivam, it is right now. Others, please put the answers. I'm waiting. Yes. Yes. So FHI, which we are getting is 3.93 megahertz. This is the value of FHI which we get. Now come to your output side. Let me write FHI over here and this is FHO. CO तो हमें पता है, CO is nothing but CMO. CMO is, we have found out the value of CMO which was 0.244 pico. Now we will find out R equivalent over here. R equivalent. Circuit को देखो और देखो यहाँ पे तो RL भी नहीं है. RL is also not given. It is not given. So you only have RD present over here. So R equivalent is nothing but RD. R equivalent is RD. RD is given as 5K. So आपको R equivalent मिल गया, आपको CO मिल गया. Find out FHO. FHO is equal to 1 by 2 pi R equivalent into CO. Find this value. Give me this value. Yes, it's right, Shivam, it's right, Aditya, it's right. Others, please put the value. I'm waiting. Yes, Mansi, it's right. No, Radhika, please check. Please put the units also. Yes, Shruti, it's right.
So I'll write down the value. FHO is coming out to be, FHO is 130.52 megahertz. So आपके पास FHI है, आपके पास FHO है. Please give me the dominant one. Which is your dominant frequency? FHI 3.93 mega. Yeah. So dominant one is the higher cutoff frequency. So higher cutoff is 3.93 megahertz. So हमें ये भी मिल गया. अब उन्होंने लास्ट पार्ट उन्होंने हमसे जो पूछा है, the third part which they have asked you is to find out the voltage gain. So voltage gain, mid band, sorry, I'll write it again, mid band voltage gain. Mid band voltage gain takes into consideration over here. Remember, you will take into consideration R signal and RL. मिलर के लिए जो लीव किया था उसको यहाँ पे कंसिडर करना है. तो we directly have this formula AVSL is equal to AV into RG upon RI plus RG. Just put the values and you will get it. अगर हमको RL भी दिया रहता तो ये फॉर्मूला हो जाता AV into RG upon RI plus RG into RL upon RL plus RD. ये फॉर्मूला हो जाता है आपका. बट RL नहीं दिया है तो इट इज RG अपॉन RI प्लस RG. जस्ट पुट इन योर फॉर्मूला. ये आपको AV आया था -4 point something. AV was -4.515. RG is 37.5. RI given to you is, how much is RI given in your circuit? 20K. So 20 plus 37.5. AVSL. Give me this value fast. Yes. Fast, give me this value. Minus, yes Tushar, it is right. AV आपने फाइंड आउट किया, RG की वैल्यू आपके पास है, RI की वैल्यू आपको दी है क्वेश्चन में. जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज. गिव मी फास्ट. Yes. Yes, those who are putting it in the chat box, it is right. You get -2.944. We have solved this question. एक चीज और इसमें मैं बता रही हूँ, मैं ऐड कर रही हूँ, although it is not in the question. Transition frequency I am adding. Transition frequency. For FET, transition frequency is given as GM upon 2 pi CGS. Everything is given to you. सब कुछ given है. GM आपने find out किया. GM you have found out, which was 0.903 milli upon 2 pi. CGS is given to you as 2 pico and CGD is given to as 0.2 pico. Just put the values and give me transition frequency also. So you can find out the transition frequency also. Give me transition frequency also.
Waiting for the answer for transition frequency. Yes, Aditya, it's right. Others, please put the answer for transition frequency. Yes. Yes, Tushar, Shruti. Rishabh, please check. So your answer is coming out to be 65.35 mega ohms. Okay, this was all about your high frequency response. Ma'am, Yes, ma'am, what is this mid-band voltage? mid-band voltage gain is the voltage gain when all your capacitors are, yani your external capacitors are short circuit and your high frequency capacitors are open circuit. तब वो maximum gain मिलता है आपको. मैम ऑल्सो डीसी एनालिसिस में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हाँ, है वो आपका मैं लूंगी ना लेक्चर लूंगी ना FET का, हो जाएगा फिर क्लियर. ओके मैम. ठीक है, वो थोड़ा FET का EDC का वो पार्ट है, जैसे ही मैं लेक्चर लूंगी हो जाएगा आपका वो भी क्लियर. So with this, we finish off your first chapter, that is frequency response. Now we have solved one numerical based on FET, high frequency. I'm just repeating, low frequency में हमने BJT का solve किया था, FET का आपको मैंने assign यानी self study दिया था. यहाँ उल्टा किया, high frequency में FET किया है, BJT का आपको मैं self study दूंगी. And that question will be having, you have to find bandwidth in that. Bandwidth यानी आपको low भी करना है, आपको high भी करना है, और उसमें ध्यान से देखना, उसमें वायरिंग कैपेसिटेंस भी होंगे, all the capacitors will be there. So सब कुछ तुम्हारा solve हो जाएगा. पता है how to solve it? You can message me, you can ask your doubts through your messages, but please try to solve that question. So today I will be uploading your this sheet which has your numericals and your modules mostly for your chapter 1. Okay, because we have finished your chapter 1. Anything you